Good evening, friends. Today we are going to discuss one of the backbone of statistics that is known as regression analysis, and try to learn regression in clarity and detail because 90% of the models that you will learn in future will require this basic. So that's why we will discuss regression in two sessions: the basic regression and advanced regression. Okay. Now, when we go to the basic regression, there are few concepts which we should know. Like first concept is correlation and causation. Correlation and causation. So, when you want to analyze the relationship between two variables, we have to find out that whether one is changing because of second or not. So let me explain in detail. So all these concepts will help you in understanding the advanced regression as well as all the advanced models. So first concept which I'm going to explain is correlation causation. So for example, there are two variables x and y. The x is your age and the y is height of a tree, right? So if you find out the correlation between age and height of a tree, it is found to be significant, strong, and positive. Because the age, your age increases, at the same time, the height of a tree also increases. So the co-movement is like this. So co-movement is like this. Your age is increasing, height of the tree is also increasing. Now the question is that whether your age is increasing because the height of the tree is increasing, or the height of a tree is increasing because your age is increasing. So this happens or not? But this is not happening. Your age is not increasing because of the height of a tree, and height of a tree is not increasing because your age is increasing. So in this case, correlation is there. Correlation exists, but causation don't exist. Causation do not exist. तो हाइट ऑफ ए ट्री और पेड़ की हाइट में और आपकी एज में कोरिलेशन तो है, कॉजेशन नहीं है. सो इफ कॉजेशन इज नॉट देयर, regression is not applicable. So the first rule we learn in regression is that basic rule: regression is not applicable if causation do not exist. अगर कॉजेशन नहीं होगा तो रिग्रेशन नहीं होगा, पहली बात. And now, so one of the professor, he say that he collected two variables, the data of two variables. The X variable is that salary of a US professor from 1950
to 2020. Let's say if you collect the data of a salary of a professor from 1950 to 2020, basically salary increases, you know that from 1950 to 2020, in 70 years, the salary of a US professor increases. And why is the crime in Africa 1950 to 2020? And he proved that the correlation between X and Y is positive, strong, and significant. Okay. So the researchers say that there is a strong correlation between level of crime in Africa and the salary of a professor in US. So there is a strong correlation. Now the question is that can we say because the crime in Africa increases because salary of a US professor increases? Or can we say salary of a professor increases because the crime in Africa increases? The answer is no. They are independent. They are independent. So there is no causation between X and Y. Because there is no causation between X and Y, so regression model cannot be built on this. So basic rule is that first of all, if you want to apply regression model, so first of all, you have to check whether the causation is there or not. Like if I give you another example, if X equal to sales and Y is equal to advertisement. So can we say the Y and X are causing each other? So here you cannot say they are causing each other. They are saying the causation lies in the direction. Now, if causation exists, so we have to find out the direction of causation. So we cannot say here sales is causing advertisement. So this equation, this direction is wrong. So what is the actual direction? The actual direction is that if you increase the advertisement, it will increase your sales. So once causation is fine, once you establish the causation that there is a causation between the two, now the second thing is that what is the direction of the causation? So we have to define which is dependent variable, which is independent variable. So sales depends upon the advertisement. So direction of the causation is this advertisement to sales. This direction is known as cause and effect relationship. So this direction is known as cause and effect relationship. So this is the basic for regression model. So theoretically, whenever you are going to apply the regression model, so first of all, you have to check if whether the causation between the variable exists. If exists, what is the direction of causation? So direction of causation come from the logic or the literature review. So this basic information is the rule number one for regression analysis. I hope it is clear now. Now we go for the next concept. Next concept is the dependence and causality. So there is a difference between dependence and causality. Let's explain this. So let me explain this concept. So concept number two, dependence and causality. So in literature, you will take use these two words very frequently. Like there is a Granger causality, multivariate causality. So
dependence and causality are these two words. Let me explain that. We are having two variables, y is equal to sales and x equal to advertisement. We know that sales depends upon the advertisement. Now the question is, listen this very carefully. The question is that sales in the month of January, right? Whether it affected by advertisement of January. So we know that sales is affected by the advertisement. So can we say the sales in January, can we say the sales in January is affected by the advertisement in January? Or can we say the sales in January is affected by the advertisement in December? Okay. Now, there are two things in this equation. This is called dependence. Dependence. Why dependence? Because the time period of the X and Y are same. So when the time period of both the variables are same, it is called cross-sectional variables. Because in cross-sectional variables, time does not matter. So when you apply regression on cross-sectional data where time do not matter, then this is called dependence. But when you use this equation, when time is very important and one variable affect other variable in future, मतलब एक वेरिएबल अगले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को फ्यूचर में इंपैक्ट करेगा, अगले महीने कर सकता है, 2 महीने बाद कर सकता है. So this is called impact of the present on future of other variable. So this is called causality. So when you apply a regression model in cross-sectional data, this is called dependence relationship. But when you apply this regression model on time series, this is called causality. So in time series, 90% of the regression is based on causality. In cross-sectional data, we always call it dependent relationship. So regression is a model which examine the dependence relationship. In time series, we apply regression to check the causality. So that's why these two terms, dependence and causality, should be understood by the people. I hope you understand that. So time period is important in causality. Time period do not matter in dependence. Okay, I hope it is clear now. Okay. So next. Now the regression equation. First of all, we divide the regression into two parts. This is called bivariate, and the second is called multivariate. In bivariate, there is one dependent variable, and there is which is written like this. And in multivariate, there are many independent variables. Like we call it y is equal to alpha plus beta 1, x1 plus beta 2, x2, and so on. So when you have only one independent variable, that is called bivariate. And when you have multiple independent variable, then this is called multivariate.
So today we focus only on bivariate, and once we understood the bivariate, then we understood the multivariate. So now I'm going to start all the concept related to bivariate regression model. So let's understand. So bi means two. Bivariate regression model is written as y is equal to alpha plus beta 1 into x. X. So there is only one x. Okay. So first of all, we have to understand that what is the nomenclature in this equation. So in this equation, the y is known as dependent variable, and dependent variable depends upon the independent variables. So this variable is called independent variable. Alpha is known as intercept, and beta is known as slope coefficient. So we have to understand the meaning of intercept. We have to understand the meaning of slope coefficient. Then we will proceed. Okay. So first is, what is the meaning of this intercept? So intercept. Now, if you want to understand the intercept, so I'm asking you simple one question. What is the value of y when x becomes 0? Y की वैल्यू क्या होगी अगर हम x को 0 पुट कर दें? So that is called intercept. So intercept, what is intercept? Intercept is the y. It is the value of y when x becomes 0. So what is intercept? Intercept y की वो वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 होती है. So intercept can be defined as the value of y when x becomes 0. This is the definition of intercept. Now, what is the definition of slope coefficient? Slope coefficient is if you change x by 1 unit. डेल्टा एक्स का मतलब है कि चेंज इन एक्स. अगर मान लीजिए एक्स को आप चेंज करते हो 1 यूनिट से, इफ यू चेंज एक्स बाय 1 यूनिट, हाउ मच वाई विल चेंज? सो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, this is known as slope coefficient. So slope coefficient can be written as rate of change of y with respect to x. So what is slope coefficient? Slope coefficient is that rate of change of y with respect to x. तो ये y का x पे change बताता है. So what is the rate of change of y with respect to x? Now how to diagram or represent this equation in a diagram? So let's see. So just recall, alpha is that value of y when x equal to 0. Beta is the rate of change of y with respect to x. Y is dependent variable, x is independent variable. Now let's see how we can represent that. Suppose this is y and this is x. अब x की वैल्यू 0 कहां पर है? X is 0 here. The value of x is 0 here. And when x is equal to 0, this is the equation, this is the regression equation. ये हमारा y is equal to alpha plus beta x है. So this is a regression line, because you know that regression is always a straight line. Suppose this is the straight line representing the regression. So this difference is called alpha.
सो हमने क्या कहा था, अल्फा इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0. सो दिस इज कॉल्ड अल्फा. ओके, सो अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट. सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0. अल्फा वाई की वो वैल्यू है जब एक्स की वैल्यू 0 होती है. क्लियर? नाउ लेट्स से you change x by 1 unit. If you change x by some unit or 1 unit, simply 1 unit. If you make change of x, this is x1 and this is x2, and you changes x1 by x2. आपने x को change किया, जैसे advertisement बढ़ा दी. Now, if after increasing the advertisement, the sale increases by this much, delta y. So the ratio of delta y upon delta x is called slope coefficient beta. So beta is the ratio of change in y upon change in x. So this is the representation of beta, slope coefficient. Slope coefficient को हम कहते हैं dy upon dx और delta y upon delta x, और बीटा को हम कहते हैं बीटा इज इक्वल टू rate of change of y with respect to x. So this is the representation of a regression model. So I hope it is clear. Another concept. Okay. Now let's say we have this equation beta is equal to alpha plus beta into x. Now, if you have the data of y and data of x, the alpha and beta can be calculated. So the values of alpha and beta can be calculated. जिस एल्गोरिथम से हम कैलकुलेट करते हैं, the algorithm is known as OLS, ordinary least square. I will explain that. So we calculate the values of alpha and beta. Once we calculate the alpha values of alpha and beta, then we can also calculate the predicted values of y. So using alpha and beta, we can also calculate predicted values of x, values of y. Sorry, this is only y. We can calculate the predicted values of y. And in fact, this portion is known as predicted values of y. So इस portion को हम y hat से represent करते हैं. This portion is known as y hat. So this portion is known as y hat. कौन सा portion? ये वाला. So this portion is known as y hat. लेकिन जब आप when you express this portion by y hat, so is it compulsory that actual y and predicted y is always equal? No. So we also add here et. Now the moment you add et, we move from statistics to econometrics. जैसे ही आपने ये et लगाया, आप इकोनोमेट्रिक्स में चले गए, रिसर्च में चले गए. So this equation is the complete equation of regression model. So what is regression model? The actual y is equal to predicted y plus some error. So this value is called, this equation is called the regression equation. Regression equation. So in research, we always use this ET to represent our regression model. अगर आपने रिग्रेशन इक्वेशन में ये एरर नहीं लगाया तो आप रिसर्चर नहीं हैं. सो रिसर्चर के लिए ये एरर लगानी बहुत जरूरी है, राइट?
So now let's see how to represent this error term. Let's say how to represent this error term. So I hope up to we are clear that actual y, predicted y. Why it is predicted y? Because it is calculated from alpha and beta into x. And the difference between actual y and predicted y is error term. So let's see how to represent that. Okay. Now, this is the regression equation. Now tell me, suppose this is the value of x. Suppose this is the a hypothetical value of x. X की कोई value मान लो इधर. This is some arbitrary value of x. So when x, अब x की value अगर इतनी है तो y कितना होगा? So the predicted value, all the predicted values lies on this line. So predicted value जितनी भी है वो सारी इस लाइन पे लाई करेंगी. So is it important? It is necessary that actual value also equal to predicted value? No. Actual value may lie here. So this is the actual y. So we are having actual y, predicted y, and this. And the difference between actual y and predicted y is known as error. Or this error is also known as a residual. So the difference between actual y and predicted y is known as error. Up because in the data we are having many x, correct? हमारे पास तो हजारों x है. So the errors come like this. So we have the errors, many errors like this. So these are the different error terms. Okay, now what we want, हमें क्या चाहिए actually? हमें चाहिए कि error minimize हो जाए. So we want all the errors should be minimum as much as possible. So we have a rule. So we calculate the values of alpha and beta in such a way that the square of the error term should be minimum. हमें क्या चाहिए? ये minimum चाहिए. अच्छा, yeah, why error square? Because sum of the error is always zero. Why some of the errors are always zero? Because कुछ positive है, कुछ negative है. If you sum it, all they are zero. क्योंकि आप देख रहे हो आधी error ऊपर है, आधी error नीचे है, तो sum करोगे zero हो जाएगा. So that's why we take the square of the sum of the square of the error terms. This should be minimum. So we calculate the values of alpha and beta. This is possible in literature that we calculate alpha and beta in such a way that this should be minimum. Therefore, this methodology is known as OLS. O means ordinary least square. Least matlab minimum. Square means E square. So the methodology of calculating alpha and beta in such a way that sum of the error square should be minimum is known as OLS. So by default, you apply OLS model in all the regression models. So when we are discussing the OLS, let me explain you the extensions of OLS. So this is the basic methodology, but we have some extensions of the OLS. So these extensions of the OLS are the WLS, GLS, PLS, and MLE. So OLS के ऊपर जो build हुए हैं models और estimation models, ये somewhere you will heard about all this. GLS में भी फिर FGLS आ गया, right?
What is WLS? WLS means weighted least square. GLS means generalized least square. FGLS, okay. PLS means partial least square. MLE stand for maximum likelihood estimation. So all these are the other models of estimating the values of alpha and beta. So these are applicable in different areas. Like PLS is applicable in SAM, GLS, FGLS is applicable in time series and panel data. Maximum likelihood estimation is as applying on complicated models. So maximum likelihood estimation method is applicable to solve non-linear problems, non-linear relationship. So like we have GARCH models, so we have logistic models, we have SAM models. So all are applicable on MLE, maximum least square model. जो CB-SAM हम लगाते हैं, that is based on MLE, maximum likelihood estimation. PLS is based on PLS. CB-SAM is based on MLE. So these are all the regression models. I'm telling you, all the models in this world, they are coming from OLS. So WLS, GLS, FPLS is a modifications in OLS. It is this technique is entirely different. It is not an extension of OLS, but it is a another substitute of OLS where which examine non-linear relationship like GARCH, logistic SAM, and so many. There are so many. Okay. So so these are the other ways of calculating regression model. So I explained you some of the basic things. Now let me go. Okay. So we have discussed correlation causation. Regression only applicable when significant causation exists. Fine. Dependent causality clear. All these things we independent variable learn. Theoretical justification, regression diagnostic. Okay, these we are going to discuss. So I explained you that regression model is expressed by y is equal to alpha plus beta into x. Beta 1 is called slope, alpha is intercept, and regression line like comes like this. Non-linear line comes like this. So non-linear is studied by maximum likelihood estimation. Linear is studied by OLS. This I already explained. And yeah, type of lines. So when you study the relationship between the x and y, so here you can see that the beta is 0. This is declining. So here beta will come negative because if x increases, y decreases. So this is called downward sloping. Downward sloping. So downward sloping means when x increases, y decreases. In this case, this is called curvilinear. So it is called curvilinear relationship. So it is a linear but in a curve. Similarly, this is positive relationship. When x increases, y increases. So we should be very, very cautious that which kind of a relationship exists between x and y. So whether it is trend, whether it is linear, whether it is non-linear, whether it is curvilinear. So there are many possibilities. Okay. So in this case, we can say it is a linear kind of relationship. It is a positive relationship. And if x increases, y also increases. So this is a positive relationship between x and y. So I already explained that these are the error terms, these lines. We want to minimize the sum of the square of the error term. We want to minimize. So this is done by OLS model. And the sum of the error term is always 0. Okay. Regression coefficient. Yeah. Okay. So two more things I need to explain to understand the regression. Let me explain that. Now try to listen because I'm going to uh, teaching you the complicated concept now.
Suppose this is the regression line. So y equal to alpha plus beta into x is a regression line. And at any point of time, at any level of x, this is suppose xi. So at this level, this value is called predicted value of y, and this value is known as actual value of y, and this difference is known as residual or error, right? So this is the basic concept of regression model, that the sum of the square of the terms should be minimum as much as possible. You know that. Okay, now I'm introducing one more term. This is the mean of y. So this is the mean of y. Mean of y. Okay. Now, if we compare these two values from the mean of y, we are having two lines. The line number one is I'm representing by pink. Okay. And line number two, I'm representing by this color. Okay. So diagrammatically, I am saying that pink color is equal to, जो पिंक वाले का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके, दिस कलर एंड प्लस ब्लैक कलर, right? You can see that this is equal to this plus this. So the pink is known as total deviation, total sum of square. What this is known as total sum of square. So what is total sum of square? Y minus y mean square. This deviation मतलब कि actual y minus mean of y minus mean of y, अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, so this is called TSS. This pink line, this line is known as uh, MSS. MSS means, now what is MSS? MSS I can write here. MSS is equal to predicted y minus mean square, MSS. And this is called RSS. So what is RSS? RSS is residual sum of square. That actual y minus predicted y this. ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा आपके लिए. सो ध्यान से देखो, जो क्रक्स है, क्रक्स क्या है? The total deviation between actual y and mean is equal to the deviation from the model from the mean and deviation from the actual y and predicted y. So we draw a very important conclusion from here, that TSS is equal to MSS plus RSS. So I just show you for one value of x. Imagine that how many values of x. So we have to take sum and square of all. So why this line is important? So those who understood it, they will can explain so many things later on. Now let me represent this in equation form. So I am erasing something here from here. So this was a line. Yeah. Now, if you divide MSS upon TSS, this will give you the value of R square. R square मतलब कि how much the model explains of the total variance.
So R square means how much y can be explained, how much y can be explained from the regression model. So this we calculate R square, right? Similarly, if you divide MSS divided by RSS, this is called goodness of fit ratio. This is called F ratio. F ratio. So F ratio is telling you how much the model regression model is statistically fit. So we calculate the two things from here, R square and F ratio. These are the goodness of fit indexes. So after explaining all these things, now I'm showing you practical example with SPSS. एक बार इसको practically भी देख लेते हैं. So let me open a regression model. Now we have two variables, income and consumption. So our common sense say that the consumption depends upon the income. So consumption is a dependent variable and income is an independent variable. This is by sure. We understand that. So we from these two equations, we can write that consumption equal to alpha plus beta into income. So this equation I am going to explain. This is our regression model. So go to analyze, go to linear. And first of all, we are going to apply linear model. Income is a independent variable. Consumption depends upon the income. Consumption depends upon the income. So we are going to make very simple regression line first. Okay. Now you can see three three summaries are very important. So let's explain this. The first value is capital R. So what is capital R? Capital R is the correlation between actual Y and predicted Y. So this is the correlation between actual Y and predicted Y. Correlation between actual Y and predicted Y. काफी सारे लोग इसको misunderstand करते हैं. So they thought that this is the correlation between X and Y. Yes, in two variable bivariate, but wrong in multivariate. It is actually the correlation between actual Y and predicted Y. I will show you how it is. So after that, R square is no, you can see R square is 90.5%. So we can say that the consumption can be explained by 90.5% by this model. R square I will explain in terms of multivariate because in bivariate it is meaningless. Now, this table I explain in detail with you. This is called MSS. This value is MSS. This value is RSS and this value is TSS. And we calculate F square. So F statistic is telling you the goodness of it. So what F statistic means? Goodness of it or statistical fit. So if F value is significant, it means your model is a good fit. And higher the F value, better is the model. So higher is the F statistic, better it is. Okay. So first of all, before moving to the third table, let me explain you how R is the correlation between actual Y and predicted Y. And this F statistics. Okay, I'm going to again calculate the predicted value. So if you go to the save,
Now we are going to save the predicted values. You can see the predicted values. Just click continue. Okay. Now what happens? The predicted value comes in your data set. This is the actual value. This is the predicted value. Can we calculate correlation between actual value and predicted value? Yes. Yesterday we learned how to find out the correlation. So I am interested to check what is the correlation between actual value and predicted value. Pearson correlation, because both are scale variables. And okay. So you can see that the correlation between actual value and predicted value is 0.951. So remember always, this R is nothing. It is the correlation between actual value and predicted value. And the square of R is also known as R square. R square means how much variance of Y can be explained with the help of Y, with the help of model. हम Y को कितना समझ सकते हैं इस मॉडल की हेल्प से. So 90%, which is very, actually it is very high. R square कभी भी इतना high नहीं होना चाहिए. R square should be lie in the range of 50% to 70%. Very high R square is seems to be fraud. So R square should not be very high. Okay. So this table is understood. Adjusted R square we can explain in context of multivariate. So this I will explain tomorrow. Okay. Now ANOVA table. Now in this ANOVA table, what we do not understood is called degree of freedom. तो आपको लोग पूछ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो एक बार यहाँ सब. So the degree of freedom, how we can calculate? We let's say n is the number of observation. So जब हमने TSS निकाला था, तो TSS का फॉर्मूला था सिग्मा y minus y bar square. So this y value is constant and all the y values are individual. So its degree of freedom is n minus 1. n minus 1. अच्छा, उसके बाद जब हमने MSS निकाला, MSS, what is MSS? Sigma. MSS था y hat minus y bar square. So now y hat is estimated by two terms, that alpha and beta, right? Alpha and beta. Y hat निकालने के लिए, predicted value निकालने के लिए आपको कितने कांस्टेंट चाहिए? एक अल्फा एक बीटा. तो 2 minus 1. So degree of freedom is number of groups, number of variables minus 1. So this is the degree of freedom of MSS. So you can see that degree of freedom is 2 minus 1 is 1. Then we calculated RSS. RSS is equal to actual y minus predicted y का स्क्वायर. अब यहाँ पर हम कितने कांस्टेंट यूज कर रहे हैं? दो, एक अल्फा एक बीटा. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया n माइनस के, क्योंकि y कितने हैं? n. हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है? n. ये वैल्यू हमने कितनी वैल्यू से निकाली? दो, अल्फा एंड बीटा. तो n माइनस के इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. n माइनस के मतलब दिस वैल्यू. So now you can see this. So 58, 59, 1. So in this way we find out the degree of freedom. देखो एक बार मैं फिर समझाता हूँ आपको. हमारे पास y की कितनी वैल्यूज हैं? n. y मीन y बार कितनी वैल्यूज हैं? एक ही है भाई, मीन तो एक ही होगा ना. तो n माइनस 1. अच्छा इसमें देखो y हैट हमने अल्फा और बीटा से निकाला तो दो. y मीन एक ही है, 2 माइनस 1. इसमें देखो y कितने हैं? n. ये वैल्यू कितने वैल्यू से निकली? दो, अल्फा एंड बीटा 2. सो 2 मतलब 2 वेरिएबल्स. n माइनस के इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम.
So then we, on the basis of this divided by this equal to this divided by 58 equal to this, and the ratio of this is called F ratio. So F ratio is telling you the goodness of it. I hope up to this table we are clear. Now we have to understand the table number 3, and the this is the table which we need to explain. So I'm removing all other values. Okay. So we need to understand this table. Okay. Now from this table, the third table, which is the most important table actually, the alpha is found to be 17. Beta is found to be 0.6. Okay, so let me write here. So beta is found to be 0.6. So this is alpha and this is beta. With the help of this alpha and beta, we can write the equation that consumption is equal to 17 plus 0.6 into income. So we can write the regression equation from this. Now, what is 17? If income of a person is 0, he need at least 17 rupees for consumption. तो यहाँ पे अल्फा क्या कितना है 17 की, अगर किसी की इनकम 0 हो जाए, कम से कम उसको 17 रुपए चाहिए अपने जीवन के लिए. So the data is saying this. So if income is 0, the consumption, minimum consumption required is 17. So this is the interpretation of this. But most of the researchers say that ये जो अल्फा है ये हाई इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, because it is just impossible that income of anybody is 0, है ना. तो ये हाइपोथेटिकल है. So this alpha value is hypothetical क्योंकि कई बार ये माइनस में भी आ जाती है. Sometimes you can feel it is in minus. So you can say it is a hypothetical value, imaginary value, which may not exist in reality. But this value is a hypothetical value when y x is equal to 0. जब x हमारा 0 होगा तो y की कितनी वैल्यू होगी वो hypothetical है. But this is the important value. This value is beta, and beta is telling you how much dependent variable depends upon. Why I'm saying dependent? Because ये cross sectional data है. Time series होता तो बोलता causality, lead lag relationship. Okay, but because we are studying the regression cross sectional data, so this is called dependence relationship. So consumption depends upon the income by 0.6. 0.6 मतलब कि अगर income किसी की 100 रुपए बढ़ी, suppose the income of a person increases by 100 rupees, how much consumption will increase? 60 rupees, right? Because 0.6 is the relationship. 0.6 is the relationship. So we can say if a person have, if the income of a person increases by 100 rupees, the consumption will increase by 60 rupees. So this is called the relationship between or dependence of consumption and income. So I think this is understood. Now we have a problem that regression equation by default assumes that this is the null hypothesis that this beta is equal to 0. Okay, let me explain again. So we have a equation that y is equal to alpha plus beta into x. Now software assume that this beta is equal to 0. हम मान लेते हैं कि भाई ये beta is equal to 0 है. Beta equal to 0 means there is no impact. There is no impact of x on y. अब आप सोचोगे इम्पैक्ट वर्ड मैंने क्यों यूज किया, इन्फ्लुएंस क्यों नहीं यूज किया? ये भी बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर x बढ़ा तो वो इवेंट की तरह से ट्रीट होगा. ठीक है, इन रिग्रेशन इक्वेशन वी यूज द वर्ड इम्पैक्ट, और सेम में हम यूज करते हैं इन्फ्लुएंस. So उसका भी डिफरेंस है. So why we are saying impact? Because if x increases by something, how much it impact the y? So we use the word impact. So there is no impact
of change in x on change in y. We can write this change in x and change in y. So we are saying that there is no impact of change in x on change in y. Okay? That's why we use the word impact. Now we calculate the t statistic. So what is t statistic? Beta minus 0 upon standard error. So beta minus 0 divided by 0.25. तो हम इसको डिवाइड करते हैं. So we divide beta upon standard error, simply beta upon standard error. If this ratio, beta upon standard error, if this ratio is more than 1.96, it means impact is significant. It means significant impact. इसका मतलब क्या है कि impact क्या है, significant है. So here we can see the t value is more than 1.96. Therefore, because we can see that the t value is more than, t की वैल्यू कितनी है, 1.96 से ज्यादा है, तो इसीलिए impact significant है. So p value is also supporting you that the impact is significant, right? So in this way we can do the hypothesis testing with the help of the regression model. So this part which I am explaining, it is I think the every researcher, whether he have a statistical background or mathematical background or not, but this must be understood to everyone कि हम रिग्रेशन से कैसे चेक करते हैं कि इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है या इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है. So this is the most important part of the regression model. So today we have covered the basic bivariate regression model. Tomorrow I will explain the multivariate regression model. हाँ, एक चीज बता दूं मैं खत्म होने से पहले. वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपका ये रिलेशनशिप, हाउ टू एनालाइज वेदर दिस रिलेशनशिप इज लीनियर नॉन लीनियर. So you can go to the regression curve estimation, and dependent is my consumption. This is my income, and I want to check whether it is linear relationship, logarithmic relationship, inverse relationship, cubic, power, compound, logistic, growth, exponential. So मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा ये रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर है. तो यू कैन जस्ट क्लिक ओके. So what the software say? Yeah. Now, so the software is giving you the goodness of it, right? तो जितना आपका goodness of it ज्यादा होगा उतना वो रिलेशनशिप होगा. जैसे मान लो लॉगरिथमिक है, so the f value is 554, so it is we assume that it is linear. 9 f value is 554, logarithmic 429, inverse 249, quadratic 272, cubic 158. so ये सब नहीं है, तो इन सब से तो वो linear ही better है. Compound is also low. Power, and if you check all the values except the power, all values are less than linear value. So it means the relationship between x and y is linear as compared to logarithmic, inverse, quadratic, cubic. So these are the different formats of the equation. और ये सारी इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रही है कि अगर ये लीनियर होती तो कैसा होता, अगर ये क्वाड्रेटिक होती, logarithmic होती तो कैसी होती. So these are the different possibilities, possible relationship in the between x and y. But comparing with all, we can say the f statistic is highest in case of linear. So we can say our relationship is linear. So that's it for today. And if anything is not understood, you can ask me. I will explain. So today's session, I dedicatedly keep on the basics of regression model so that I can build
on this in tomorrow session. So give me a minute. Okay. Yeah, Sohil. गुड इवनिंग सर। Good सर evening. अभी एंड में आपने सिखाया ना कि वो लीनियर भी था और पावर भी था, मगर हमारा तो जो अजम्पशन है वो लीनियरिटी होना चाहिए। तो वो सिर्फ लीनियर देख के ही हम लोग रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कर सकते हैं ना? Yeah, because the regression is significant, so we can say it is a linear. अगर वो या insignificant होता तो yeah, so we cannot make प्राइम। linear relationship. ओके, एंड सर मुझे ये पूछना था कि सर अभी एक नॉन पैरामेट्रिक का भी सेशन आप लोगे ना? सो हाउ हाँ, मेनी सेशंस आर रिमेनिंग? वो हाल ठीक है। वो मेरे हिसाब से अगर मैंने लिखा है तो मैं लूंगा उसका सीजन। ओके, तो मतलब और 2 लेक्चर बचे क्या सर आपके? एक दो बचे हैं ना? हाँ, तो हाँ, उस हिसाब से तो दो बचे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। या ओके, सो एनी अदर क्वेरी? सो आई होप द रिग्रेशन मॉडल थोड़ा सा आपको ऊपर से चला गया होगा, बट बिलीव मी, विदाउट लर्निंग द रिग्रेशन मॉडल आप किसी और मॉडल पे काम कर ही नहीं सकते, because 90% of the models are based on a regression model, so it is a basic for all the models. सर एक सर छोटा सा आई हैव। डाउट है। Yeah. Okay. Yeah, please. Any query? यस सर, गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. सर सर इसमें जहाँ पे आपने सर प्रिडिक्टेड स्कोर जहाँ एस्टिमेट किया था, उसके बाद में हाँ, उसका आपने कोरिलेशन देखा था, तो सर वहाँ पे वो अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू क्यों ली थी? क्योंकि वो कोरिलेशन अनस्टैंडर्डाइज वैल्यू ली थी ना सर वहाँ पे। हाँ। एक्चुअली अनस्टैंडर्डाइज कोरिलेशन कभी अनस्टैंडर्डाइज नहीं होता, कोरिलेशन इज ऑलवेज स्टैंडर्डाइज। आई थिंक आप बीटा की बात पूछ रहे हो कि अनस्टैंडर्डाइज बीटा। नहीं सर, जहाँ पे आपने प्रिडिक्टेड स्कोर वहाँ पे एस्टिमेट किया था, उसके बाद में जब आपने कोरिलेशन दिखाया था डेमोस्ट्रेट करके। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। कोरिलेशन हमने कोरिलेशन निकाला था कंजम्पशन। वो अच्छा, डिलीट कर दिया। लेट मी सी। अच्छा, हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। Okay, actually, the predicted value is always unstandardized. We cannot calculate the standardized predicted value. Standardized predicted value होता ही नहीं है। Predicted value हमेशा actual के साथ निकलती है ना। ओके So सर। it is always predicted value तो standardized होता ही नहीं है सर। Predicted value तो standardized हो ही नहीं सकता। It is always unstandardized. ओके सर। So यही था क्वेश्चन आपका। हाँ हाँ सर, यही था। अच्छा, वो स्टैंडर्डाइज तो हो ही नहीं सकता। स्टैंडर्डाइज तो मतलब जेड स्कोर हो गया ना, फिर तो जेड स्कोर आप प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हो। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। ओके। या सो एनी अदर क्वेरी? गुड यस इवनिंग सर, आई सर। हैव। सर आई हैव वन डाउट। सर हम्म। टुमारो यू आर गोइंग टू टीच assumptions also, right, of regression? हाँ, वो मार्कोव थ्योरम जो होती है ना, वो समझाऊंगा पूरा। तो सर उसमें एक वो मल्टीपल। मतलब उसके एनालिसिस में ना आउटपुट में कुक टेस्ट करके भी आता है सर। हाँ, उसके वो रिलेटेड भी आउटपुट कुछ टेस्टिंग का बता होता है, देना। ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके सर, थैंक यू सो मच। या प्रियंका। गुड इवनिंग सर। सर मुझे एक हम्म। डाउट था, ये जैसे जो लिटरेचर रिव्यू जब हम बनाते हैं, मैंने कई सारी थीसिस पढ़ी थी अपने यूनिवर्सिटी के भी, सैंपल ओरिजिनल देखे थे। तो थीसिस में लिटरेचर रिव्यू के अलावा लोगों ने हिस्ट्री भी बहुत सारी डाल रखी होती है टॉपिक की, तो हमें भी डालनी होती है क्या सर काफी हद तक? और किसी किसी में मैंने थीसिस जो शोध गंगा के थ्रू जो मैंने डाउनलोड की है सर, उसमें तो खाली लोगों ने लिटरेचर रिव्यू के बारे में ही दे रखा है, जैसे जो जो ऑथर्स का रहता है, हिस्ट्री नहीं दे रखी। और कहीं कहीं किसी किसी फाइल में मैंने देखा है कि हिस्ट्री भी दे रखी होती है सर, फिर वो डिफरेंस कैसे रहते हैं इंट्रोडक्शन और इसमें? देखो ना, तो पहली बात तो मैं आपको सलाह दूंगा कि शोधगंगा मत देखना आज के बाद। अच्छा सर, वो तो मैंने डाउनलोड की है कुछ। वो कबाड़ खाना है, उसमें सिर्फ कबाड़ मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ काम का नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। शोधगंगा प्योरली एक कबाड़ खाना है, क्योंकि उसमें उसका कोई रिव्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई भी
कैसी भी थीसिस आपको मिल जाती है गलत सलत, तो उसको तो आप रेफरेंस मान ही नहीं सकते कभी भी। ओके। तो इसलिए मेरी सलाह ये कि बंद कर दो शोधगंगा देखना। दूसरा जो सवाल है कि लिटरेचर रिव्यू, हाँ लिटरेचर जी। रिव्यू ना, लिटरेचर रिव्यू हमें सिस्टमेटिक करना चाहिए, ना कि नैरेटिव। तो जब आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करते हो, तो उसमें हिस्ट्री का मतलब है कि ये कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, है ना। तो जो भी आप कंसेप्ट आप सीख रहे हो या आप बता रहे हो, तो वो कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, तो वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो उसमें आप टेबुलर फॉर्म में समझा सकते हो कि पहले ये फैक्टर इसने दिए थे, फिर ये फैक्टर आए, फिर ये फैक्टर आए, अब ये फैक्टर आए। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज हिस्ट्री, और दैट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, उसको हम हिस्ट्री नहीं बोलते, वो हम बेसिकली हमारा लिटरेचर रिव्यू का ही पार्ट होता है। ठीक है। हाँ जी सर। सर एक चीज और पूछनी थी, ये जो हम रिसर्च पेपर में जो क्वेश्चनर हम बनाते हैं, इसकी क्या लिमिट रहती है कि कितने लोगों से भरवाना चाहिए इस केस में? तो आप क्वेश्चनर की बात, सैंपल साइज की बात कर रहे हो? हाँ जी सर, रिसर्च पेपर के लिए जो हम बनाते हैं जैसे, वो कितने लोगों से भरवाना होता है, उसकी क्या लिमिट देखिए, रहती है? कम से कम 384 तो होना ही चाहिए। नहीं सर, वो तो थीसिस के लिए हो गया ना सर, मैं खाली रिसर्च पेपर की बात पूछ रही थी आपसे। देखो, रिसर्च पेपर और थीसिस में मैं आपको एक अंतर बताता हूँ। आप जो बाथरूम में गाना गाते हो ना, उसको कहते हैं थीसिस बनाना। और जो सारेगामा की मंच पे आप जो गाना गाते हो ना, उसको कहते हैं रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर का जो लेवल है, वो थीसिस के लेवल से 1000 गुना बेटर होता है। जबकि आप उसको उल्टा मान के चल रहे हो कि मैं थीसिस में बड़ा काम करूंगी, रिसर्च पेपर में मैं छोटा काम करूंगी, तो आप उल्टा काम कर रहे हो, है ना। ए, थीसिस तो आपके आपके यूनिवर्सिटी के वो जो घटिया से प्रोफेसर होते हैं ना, वो इवेल्युएट करेंगे। मैं उनको घटिया से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में प्रोफेसर जो है वो रिसर्च रिसर्च नहीं करते, और स्पेशली सरकारी यूनिवर्सिटी में। तो वो उनकी बड़ी पटांग सी नॉलेज होती है। लेकिन आप जो पेपर लिखते हो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे कौन बैठे हैं? टॉप यूनिवर्सिटीज के रिव्यूअर। एक थीसिस का काम कौन इवेल्युएट कर रहा है? आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। और जो रिसर्च पेपर का काम है वो कौन इवेल्युएट कर रहा है? वो इंटरनेशनल प्रोफेसर। तो कौन सा काम अच्छा होना चाहिए, थीसिस का या पेपर का? सर पेपर का। तो पेपर हाँ को जी। आप कम से कम 100 टाइम सीरियसली लो। और ओके। थीसिस तो ऐसे निकल जाती है, मैंने तो इंडिया का बहुत बुरा हाल देखा है। आप कुछ भी उठपटांग लिख दो, थीसिस पास हो जाती है। हाँ जी हाँ थीसिस जी। में प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने, मैंने मतलब एक महीने में कम से कम 100 थीसिस हमने काम कराया। एक महीने के अंदर अंदर हमने 100 थीसिस बना दिए हैं। तो थीसिस की कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए शोधगंगा की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि थीसिस तो महीने 2 महीने में हो जाती है पूरी। रिसर्च पेपर में दिमाग लगाना पड़ता है पूरा। तो रिसर्च पेपर इज दी इंटरनेशनल लेवल। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है, जैसे मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, हम टीचिंग प्रोफेशन में तो जरूर है, बट आज की डेट में टीचिंग प्रोफेशन में भी बस टीचर से रिसर्च एंड यही सब चीज मांगी जाती है सर, फिर टीचिंग की अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्या सर? हमें अपने फ्यूचर के लिए रिसर्च पे ही फोकस करना चाहिए या टीचिंग को भी लेके चलना चाहिए सर? देखो, बिना बिना रिसर्च के ना कभी भी आप अच्छी टीचर नहीं बन सकते। हाँ जी हाँ जी। तो लेकिन क्या है कि हम लोग रिसर्च और पब्लिकेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि हम रिसर्च करें पब्लिकेशन करें। और पता है क्या होता है, मेरे पास लोगों के फोन आते हैं कि सर एक पेपर लिख दो और या पेपर में हमारा नाम डाल दो। तो मैंने कहा रिसर्च तो फिर रिसर्चर कैसे हुए? रिसर्च का मतलब तो ये होता है कि आप किसी टॉपिक के बिल्कुल डेप्थ में चले गए। तो हमारी इंडियन एजुकेशन में क्या है कि पब्लिशर तो बहुत है, रिसर्चर नहीं है। और रिसर्चर नहीं होने की वजह से वो क्लास में पीपीटी टीचिंग या किताबी टीचिंग करते हैं, तो वो उससे हमारे हमारा जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो डिग्री तो लेके निकल रहा है, तब उसे कुछ नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि टीचर जो पढ़ाते हैं वो रिसर्च करके नहीं पढ़ाते। वो किताब वो पढ़ा देते हैं और उस स्टूडेंट को कुछ आता नहीं है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ये ऑर्डर निकाले हैं, उन्होंने नैक बना दिया, एनबीए बना दिया। हाँ और जी हाँ उन्होंने जी। बड़ा साफ करा है कि भाई ए स्टार ए प्लस प्लस उन्हीं को देना है जहाँ पे रिसर्चर होती हो, रिसर्च होती हो।
तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन आपको पता है कि हालात एकदम से नहीं बदलते हैं, धीरे 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 बदलेंगे। हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में चीजें बदल जाएं। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर आपकी सीवी में रिसर्च नहीं है तो ये पक्की बात है कि प्रमोशन नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी आगे जाके, ये तो पक्की बात है। क्योंकि सर मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन मैं देख रही हूँ कि लोग ज्यादा रिसर्च पे ही फोकस है, मतलब टीचिंग को कुछ इतने काउंटिंग में नहीं, लेते नहीं है टीचिंग तो बिना भी। रिसर्च के हो ही नहीं सकती ना। प्रॉब्लम क्या है कि एक अच्छी टीचिंग बिना रिसर्चर के हो ही नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी सर। और सर मैंने देखा ये टीचिंग प्रोफेशन में भी कई लोग टोटली ही रिसर्च में आ चुके हैं, जैसे मेरी गाइड भी है, वो भी टोटली शी इज इनटू रिसर्च ही रिसर्च। उनको आगे टीचिंग में भी कुछ नहीं है, बस जॉब जरूर करती है कॉलेज में, बट उनके लिए रिसर्च ही सब कुछ रह जाता है। तो वो चीज मैं देख रही हूँ हाँ, काफी लोगों का बिना चेंज हो गया है। बिना रिसर्च के ना आप अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। हाँ जी, हाँ जी सर। और स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्चर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और टीचर तो अच्छा रिसर्चर होना ही चाहिए। चलो खैर, ये तो डिस्कशन चलता रहेगा। अनुभव। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड। सर मेरे एक छोटा सा डाउट था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी नॉर्मेलिटी के ऊपर जो आपने सेंड की थी। हाँ, तो सर उसमें लिकर्ड्स के लिए मेरा पूरा, तो फिर मुझे नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज अब तो मुझे लगता है मुझे चेक करनी चाहिए नॉर्मेलिटी इस हिसाब से तो। देखिए, आपको स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस तो रिपोर्ट करनी चाहिए, जो कि 1 से कम होनी चाहिए। दैट इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वो लेक्चर। तो कि थीसिस में वही आपका, डाल दें? हाँ, तो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस तो आप रिपोर्ट करिए कम से कम। अच्छा, कोई और टेस्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है? सीवी सैम और पीएलएस सैम आपको नॉर्मलिटी के नाम पे स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ही देता है, इसके अलावा और कोई टेस्ट नहीं। ओके। तो जो भाई, अब जिन लोगों ने ये पीएलएस बनाया है या एमोस बनाया है, वो दुनिया के बेस्ट रिसर्चर हैं। हाँ ठीक है, जी जो सर। रिंगल है, रिंगल हेयर, ब्लैक, तो हाँ जी ये सर। सब, ये सब पूरी दुनिया के बेस्ट ऑफ द रिसर्चर हैं। तो इन्होंने कुछ सोच के ही तो नॉर्मलिटी के लिए स्क्यूनेशन कर्टोसिस दिया होगा ना। तो फिर मुझे वही अप्लाई करना चाहिए, तो वही अप्लाई करो। क्योंकि वो सुन के तो मुझे लगा नॉर्मेलिटी निकालना ही बेकार है इस पे। ये बड़ा कंफ्यूज टॉपिक है असल में नॉर्मलिटी, हाँ इसलिए जी। मैंने वो वीडियो बनाया था, और क्योंकि आपकी वीडियो सुन के मुझे, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई उसके बाद, मतलब लॉजिकल लगी इसलिए इसलिए कंफ्यूज हो गई, लॉजिकल बात ये। हाँ, वो मैंने चूंकि यूट्यूब में ओपन डिस्कशन के लिए डाली है, तो मेरे पास काफी लोगों के रिस्पॉन्स भी आए, लेकिन मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स लॉजिकल नहीं लगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। हाँ नॉर्मलिटी पे जी। क्लैरिटी लेवल नहीं है, तो उटपटांग काम होते हैं, तो इसलिए बेटर ये कि, सर एक और क्वेश्चन था, मैंने रिस्क को मेजर करने के लिए, रिस्क टॉलरेंस मेजर करने के लिए एक 20 स्टेटमेंट का स्केल लिया है। हाँ, वो स्टैंडर्डाइज स्केल है किसी का, ठीक है, लिकर्ट स्केल पर। तो सर उसमें ना उन्होंने 5 फैक्टर्स निकाले हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे फैक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये देखना था कि किस में रिस्क टॉलरेंस लेवल ज्यादा किस में कम है। तो उन फैक्टर्स को मुझे यूज करना पड़ेगा अब? क्योंकि आपको एक कंबाइंड स्कोर तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रिस्क टॉलरेंस किसी एक स्टेटमेंट से तो मेजर नहीं हो सकता। हाँ जी सर। तो वो तो फैक्टर का कंपोजिट स्कोर ही होगा। तो जैसे मैंने अगर वो 5 फैक्टर, जैसे मैंने सीएफए रन किया तो 5 फैक्टर निकल कर आ गए उससे, वो वाले जो उन्होंने बिल्कुल, निकाले आपने हुए थे। हर बट फैक्टर उनका का मैं क्या स्कोर करूं? निकाल के, हर फैक्टर का स्कोर निकाल के आपको एक कंपोजिट स्कोर भी निकालना पड़ेगा। तो मतलब उन 5 फैक्टर का पहले मैं एक स्कोर निकालू टोटल, फिर उनका एवरेज निकालू एक, ये, और उस एवरेज को फिर लिंक करूँ जेंडर से, ये जो भी बिल्कुल। मुझे करना है। या ओके ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। या देवाशीष, जी sir, good evening. गुड इवनिंग। Sir, would you mind to repeat the diagram in which you have taught about TSS, RSS, and MSS? Sir, would या, you could you please recap हाँ, it? ओके। देखिए, दिस इज ए रिग्रेशन लाइन, एंड किसी भी एक एक्स की वैल्यू के लिए, जैसे अगर आपको मैं डेटा दिखाऊं, तो अगर ये डेटा है, तो मान लो किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर 120 हो गई, तो ये एक 98 है ना, और एक Yes. 89 है। आपको यहाँ पे तीन वैल्यू दिख रही है, एक आपको दिख रही है, दिस इज एक्स, ठीक है ना, दिस इज एक्चुअल वाई,
और दिस इज प्रिडिक्टेड वाई। तो 120, 98, 89 ये इस तीन वैल्यूज है। तो ये तीन वैल्यूज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे बहुत सारी वैल्यूज है, मैं तो आप कोई भी आर्बिट्री ले लेते हैं। तो हमने कहा कि x की वैल्यू आई थिंक 120 थी, कि जब इनकम 120 है तो हमारा एक प्रिडिक्टेड वैल्यू है, आई थिंक एक आपकी एक्चुअल वैल्यू है, वो ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, दोनों का। तो मान लीजिए हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, वो नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये तो एक डिफरेंस है, ऐसे यहाँ 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 बहुत सारे डिफरेंस होंगे। तो अगर आप इन डिफरेंस को निकाल के स्क्वायर करके प्लस कर दो, दिस इज कॉल्ड आरएसएस। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम एक y का एक मीन ले लेते हैं, जो पूरी थीसिस में कॉमन होगा, y का एक ही मीन होगा। अब इस मीन से हम दोनों डिस्टेंस लेते हैं, एक ये वाला और ये वाला। इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं TSS। ये डिस्टेंस किसके बीच का है? एक्चुअल y माइनस मीन स्क्वायर सम। तो दिस इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। और इसी तरह से एक ये वाला ले लो, ये है मॉडल सम ऑफ स्क्वायर। ये y हैट माइनस y मीन का स्क्वायर हो गया। तो ये तीन चीजें हैं। अब ये जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, ये इन दोनों का एडिशन है। ये आप ये देख लो कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है। Yes, sir. तो Yes. ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया था। Okay, okay. Thank you so much, sir. ओके, या महेश। Hello, sir. Good evening. Actually, today is very clear session. This is very good. I think we all very clear about the regression equation. Actually, I have some query regarding some different from this statistical analysis. I want to clear conceptual clarity about the dimension, construct, dimension and variable, and construct and concept. This is one query of mine. Another, I would like to conceptually clear about the degree of freedom, right? And then after, okay, first of all, these two things I would like to clear. ओके, एक्चुअली पहला जो आपने पूछा था वो पूछा था कि कंस्ट्रक्ट, डायमेंशन, फैक्टर, ये सब चीजें पूछी थी ना। Yeah. अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आज हम एक रिसर्च के साथ डिस्कशन भी चल रहा था हमारा। तो एक है सर्विस क्वालिटी। ठीक है, मान लीजिए हम सर्विस क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो सर्विस क्वालिटी, सबसे पहली बात है कि सर्विस क्वालिटी को मेजर कैसे किया जाए। तो सर्विस क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमने 5 चीजें ली: रेस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी, टेंजिबिलिटी, अश्योरेंस, एम्पैथी। ये 5 चीजें सर्विस क्वालिटी की डायमेंशंस हैं। ठीक है। Yes. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। Yeah. अब सवाल ये कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सर्विस क्वालिटी को इम्पैक्ट करेंगे। तो ये हमारे हो गए फैक्टर। जैसे हमने कहा कि भाई अगर आपका ट्रस्ट है, या ईज ऑफ यूज है, या परसीव्ड रिस्क है, या सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐप में आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, आपको लगता है कि भाई ये मेरा डेटा सिक्योर है, उससे आपको क्वालिटी फील होगी। जी। इन तो क्या है कि ये तो हो गए डायमेंशन, हाँ। और ये हो गए फैक्टर जिससे सर्विस क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है ना। और हर फैक्टर जो है वो क्योंकि आइटम से, स्टेटमेंट से मिलके बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट वो होता है जो स्टेटमेंट से मिलके बनता है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो आपने पूछे थे कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन तो किसी को मेजर करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो डायमेंशन है।
और फैक्टर का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट जो है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, जैसे जिनका मेरे मेरे केस रिलेशनशिप। में सर हाँ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ठीक है, ना। तो आपका हो गया फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। हाँ, ठीक है, इसके रेवेन्यू कुछ सर, डायमेंशन होंगे रेवेन्यू सर्विस एंड डेब्ट 3 डायमेंशन हो गए सर। इसका। अच्छा, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के बेसिकली 3-4 डायमेंशन है। इसको हम हाँ, कहते हैं पीपल, प्रॉफिट एंड एक और होता है रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट वो सर। वो प्रॉफिट में आ गया, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानिंग, प्लेनेट। हाँ या ठीक है, तो नॉर्मली सस्टेनेबिलिटी को हम 3 चीजों में देखते हैं, हाँ जी, प्रॉफिट, पीपल एंड आईपीवी आ प्लेनेट। चुका है सर अब तो। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए डायमेंशन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के। हाँ जी, ठीक है, अब कुछ फैक्टर होंगे जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। हाँ जी, तो डेमोग्राफिक वो होंगे। हाँ आपके वो होंगे फैक्टर्स, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। हाँ जी, ठीक है, तो उसमें आपने क्या क्या लिया? जैसे आप मान लो डेमोग्राफिक हो गए, सोशियो इकोनॉमिक हो गए, इन्वायरमेंट हो गए। तो जैसे आपने कहा कि वो सोशियोग्राफिक फैक्टर है, हाँ, डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक का तो मुझे नहीं लगता कि डेमोग्राफिक नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी में आएगा सर वो। आएगा। हाँ, डिपेंडेंट पॉपुलेशन आएगा, डेंसिटी आएगा, साइज ऑफ द एंटिटीज आएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इन फैक्टर से फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। हाँ, ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए फिर। ये लेफ्ट हैंड साइड का जो फैक्टर हो गया ना सर, राइट या हैंड साइड का डायमेंशन हो गए। बिल्कुल, ये डायमेंशन है आपकी। हाँ, और सेंटर का जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। हाँ, और इधर का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह ये सकते हैं। इंडिपेंडेंट, दीज आर द इंडिपेंडेंट फैक्टर्स या। हाँ जी। अब सर जब जब मैं आइटम में जाऊँ ना सर, सब क्वेश्चन बना रहा हूँ जैसे कि स्केल क्वेश्चन में, ठीक है, आइटम ये यहाँ से आइटम, जाएगा ना सर। ये आइटम्स आपके लिटरेचर रिव्यू से आते हैं, आप खुद हाँ नहीं जी, बना सकते सर इनको। हाँ हाँ, लिटरेचर से। दीज आइटम्स ओनली कम फ्रॉम द लिटरेचर। हाँ जी, ये एटलीस्ट 3 होना चाहिए ना सर, हम्म। आइटम, आइटम ऑन आइटम, हाँ, यूज। मिनिमम, या मिनिमम 3 आइटम तो होने चाहिए एक कंसेप्ट के अंदर, या। ओके, देन आपने बोला था जब कंस्ट्रक्ट टाइम्स 10 बोल रहे थे ना सर आप, हम्म। क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टेटमेंट इतना होना चाहिए। हाँ यस, अब 3 होने चाहिए कम से कम, या। नहीं, जब टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना होना चाहिए, आप ऐसा बोल रहे थे ना कल या परसों। वो मैं बोल रहा आपका था कि कम कितना से कम कितना 40 कंस्ट्रक्ट था। 40 के आसपास, हाँ, मिनिमम कंस्ट्रक्ट 40। टाइम्स 10। हम्म। जैसे कि मेरा 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 5 कंस्ट्रक्ट हो गया, हम्म। तो फिर मुझे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन होना चाहिए उसमें, स्टेटमेंट। नहीं, 50 नहीं, 40 के ऊपर हो तो ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। या ओके। और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कंसेप्ट क्या है सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि कम से कम कितने ऑब्जर्वेशन आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है मॉडल को रन करने के लिए। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर मिनिमम रिक्वायर्ड टू रन एनी मॉडल, सो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना। हाँ सर, थैंक यू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कम से कम कितनी ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए ही चाहिए टू रन दी मॉडल, और उससे ऊपर जो भी है वो आपका फ्रीडम है, डिग्री फ्रीडम। सो नंबर ऑफ पैरामीटर माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, हम इसको कहते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, इज कॉल्ड फ्रीडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको बैंक में सैलरी आती है आपकी, हाँ जी, आप उस सैलरी में आपने कह दिया कि मेरे को इतना लोन देना है, इतना ईएमआई देनी है, इतना रेंट देना है, इतना वो देना है, तो ये क्या कंस्ट्रेंट हो गए, दीज आर दी कंस्ट्रेंट। ठीक है, हाँ जी, और कंस्ट्रेंट पे करने के बाद जो बचा, भाई वो उसमें रेजिडुअल। आप कुछ भी खर्च करोगे। हाँ, रेजिडुअल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कितना कंस्ट्रेंट निकालने के बाद कितना आपके पास बचा, बचा है। तो वो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, है ना। हाँ जी सर, थैंक यू सर। दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि नंबर ऑफ टोटल टोटल माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर और वो बात है ना, वो फिक्स इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट, वो मॉडल में बोलते हैं ना सर, उसका कंसेप्ट क्या होता है? सर वो कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, वो अभी समझ में नहीं आएगा। वो हाँ जी। हेट्रोजेनाइटी, पैनल हेट्रोजेनाइटी का कंसेप्ट है कि जैसे आप 15 कंपनीज को स्टडी कर रहे हो, हाँ तो जी। वो क्या 15 कंपनी सिमिलर है या डिफरेंट है। तो अगर वो सारी कंपनीज एक जैसी हैं तो वो होमोजीनियस हो गई। हाँ जी। अगर वो सारी कंपनी जिनको आप स्टडी कर रहे हो अगर वो डिफरेंट है तो वो हेट्रोजीनियस हो गई। जी। तो अगर वो हेट्रोजीनियस है तो फिक्स इफेक्ट लगेगा, लेकिन अगर वो हेट्रोजीनियस रेंडम है तो वो एक्चुअली। रेंडम इफेक्ट लगेगा। तो वो कंसेप्ट इसमें फिक्स इफेक्ट और रेंडम इफेक्ट का कंसेप्ट है। ओके। दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन हेट्रोजेनिटी। ये टाइम सीरीज में नहीं होगा सर? नहीं नहीं नहीं, ये टाइम सीरीज का पार्ट नहीं है, ये आपका पार्ट है पैनल डेटा का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। यस। समृद्धि। गुड इवनिंग सर। यप। सर मैं ये कहना था कि कि अभी जो मैंने वीडियोस देखी हैं मुझे काफी क्लैरिटी हुई है कंसेप्ट्स की। मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था, पर एक्चुअली में एक और चीज थी। थोड़ा सा आपसे गाइडेंस लेना चाह रही थी कि नाउ आई वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर। मैंने एक रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर भी किया था, अभी आपसे टाइम भी मांगा। थोड़ा सा मुझे टाइम वक्त दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा बात कर सकूं आप। टाइम की ना थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है मेरे पास, तो अभी आप अगर कोई पूछ लोगे सवाल तो मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। एक्चुअली देखूंगा, मैंने आपका पेपर देखा भी नहीं, सही बताऊं आपने मुझे कहाँ भेजा है, आई आई डोंट नो। अच्छा, बस आप थोड़ा मुझे सा आपका वक्त आप, चाहिए था। और आप मुझे एक हेलो, बार व्हाट्सएप कर दो, मैं आवाज कट रही है सर। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो एक बार पेपर, अगर पेपर में मैं देख लेता हूँ आप क्या पेपर किस पेपर पे काम कर रहे हो। नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया भेजा था और थोड़ी आपकी गाइडेंस चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि आप जो नेक्स्ट वर्कशॉप होंगी ये क्या कि ऑनलाइन, मगर ये बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं जो कि पहले नहीं आइडिया था। मगर आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जैसे हमोस का हो गया, आगे जो है पीएलएस की, ये आप ऑनलाइन जब मगर आगे इसके बाद स्टार्ट कर दो ना जी हम सर। सब लोग अप्लाई कर लेंगे। यू विल गेट डेफिनेटली नोटिफिकेशन फॉर दैट। तो आप मुझे उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात कर लूंगी। टाइम दे ठीक है। दीजिएगा। ओके। ओके सर। सर नाइट सर। या एन के वर्मा। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दी पॉपुलेशन साइज से सैंपल कैसे निकालते हैं फॉर सोलो ट्रैवलर, जो मैंने एक टॉपिक बोला था आपको। तो आपने बताया था होमोजेनिटी और वेरिएंस से निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन टेस्ट से निकाल सकते हैं, फिर पावर ऑफ टेस्ट से भी निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन आयर स्टेटमेंट से भी। सो इज देयर एनी सोर्स फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द डिटेल ऑफ दीज टेस्ट और रीड मोर अबाउट इट? देखो मैंने एक्चुअली क्या है कि मेरा एक यूट्यूब पे वीडियोस है आई थिंक सैम्पल साइज के ऊपर, और उसमें सारे टेस्ट मैंने आई थिंक समझाए हैं। तो आप एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सारे सोर्स आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। ना तो आपको किसी किताब में मिलेंगे, ना ही किसी रिसर्च पेपर में मिलेंगे। ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से कलेक्ट किए हैं बेसिकली। Yes, sir. Actually, I was not getting the full detail about these tests, so that's why I asked you right now. और या आई नो दैट, क्योंकि एक किसी भी एक जगह में आपको ये सब नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि इसकी Yes. एक वर्कशॉप ही लॉन्च करनी पड़ेगी सैंपल साइज So डिटर्मिनेशन पे। I'll definitely watch your videos. And one more question, sir. Suppose there is less number of respondents, so we choose the interview method. So what will be the way to frame the sample size in that case?
देखिए इंटरव्यू में तो सैंपल साइज आपका 25 भी हो तो बहुत ज्यादा माना जाता है। तो आइडियली हम लोग अगर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो हम आइडियल वैल्यू लगते हैं कम से कम 25 तो हो जाए। तो 25 इज द फिगर दैट वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव। So it is compulsory or it is like ये प्रैक्टिस है। आप जितने भी रिसर्च पेपर आप पढ़ोगे ना जो क्वालिटेटिव इंटरव्यू बेस्ड है, तो नॉर्मली वो 25 की फिगर तो कोशिश करते हैं कि 25 के आसपास वो पूछें। अब डिपेंड करता है कि आप पूछ किस रहे हो। अगर मान लो सीईओ है तो उसमें तो 10 ही बहुत है। exactly, sir? है ना? तो क्योंकि Like 10 सीईओ suppose से बात entrepreneurs, एंटरप्रेन्योर के लिए तो 25 कम से कम होने चाहिए आपके पास। okay, okay, sir. क्योंकि वो तो इजीली मिल जाते हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटरप्रेन्योर तो बहुत मिल जाएंगे आपको। No, तो कम से actually, कम sir, there are specificity in that also. So in that case, like if we say women entrepreneurs, so there are less number of women entrepreneurs. नहीं So नहीं बहुत है वुमेन एंटरप्रेन्योर थोक में है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो लिंक्डइन पे इतना देखता हूँ डेली कोई ना कोई पोस्ट आई रहती है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत हो गए हैं। तो okay. अब तो बहुत हो गए। खैर अब तो बहुत अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए 25 की फिगर तो आप अचीव कर सकते हो आराम से। Mhm. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. थैंक्स।